ओके चैप्टर 4 कौन रहिला ना बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन द स्टोन एज द अर्लीस्ट पीपुल की कांसेप्ट हमें को कांसेप्ट विषय टॉपिक रे जानिबा पिले द स्टोन एज पैलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक तो विषय रे हमें आज डिस्कशन करबा देखिबा को पर्यंत जाउची डिस्कशन करबा हमें पार्ट पार्ट करके पढ़ेबा ओके तो अच्छे अर्ली ह्यूमन वाज हंटर गैदर सेते बेले कोन करथिले ना एकाठी हेके शिकार करथिले हंटर काहे एनिमल्स ए सब इट मीन्स दैट ही मूव फ्रॉम ता माने ये गोटे प्लेस रो आ गोटे प्लेस को जाउथिले कोथि पय ना सर्च ऑफ फूड सर्चिंग पय ही डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ऑल हिज नीड्स सो तांकर सब नीड्स पय से कहा पर डिपेंडेंट रहउथिले ना हमर नेचर अर्ली मैन वाज आल्सो ए नोमैड he traveled a great distance to find food. He fishes, hunted for wild animals, gathered berries, nuts, wild roots and fruits. ये सब थी कलेक्शन ପାଇଁ से ट्रांसफर करथिले हां कि नै गोटे जगह रे सब मिल जिवो कि there are many reasons for his moving from a place to place से जो place to place जानते बहुत गुड़े रीजन अच्छी तो ता भीतर कौन फास्ट रीजन इफ ही स्टे एट वन प्लेस जदि से गोटे प्लेस रहंती फॉर ए लॉन्ग टाइम बहुत टाइम धरी all the available food would have been eaten up ताने सब सेठु सरी जीवो गोटे प्लेस रे यदि रहिबे ताले सेठी जति फूड रहउची तो से सब रहिबो कि पॉसिबल न animal move from place to place in search कोथि पय ना ग्रास वाटर एगुडा ग्रास आ वाटर पय किए जानती गोटे प्लेस रो गोटे प्लेस को एनिमल्स माने एनिमल्स एंड अर्ली मैन हु हैज मैन कोथि पय जाय ना हंटर had to follow their movements बुझेला हंटिंग में plants and trees bear fruits in different seasons so early man had to move in search different fruits and other plants products people plant animals ये सब किछि कोन दरकार करंते ना नीड वाटर सर्वाइव ପାଇଁ वाटर टा आंको ପାଇଁ कंपलसरी जे कोनोसे एनिमल्स हो पीपल हो कि प्लांट्स हो all rivers are not perennial people living on the banks of seasonal rivers तो सबुठी सबुबेले पानी अवेलेबल रहेनी तो सो अनुसार जो सीजन में जोटी पानी अवेलेबल रहे ये सर्च करिकि से सीजन सेठी जाके पहुंच जांदी साधारणतः हमर सेतेबेले पीपल माने प्रथमे कोन कहउथिले जोटी रिवर से साइड रे रहउथिले तार दुईटा कंडीशन थिला गोटे होथिला कोन ना हमर एग्रीकल्चर पे सुविधा थिला बाकी अन्य नीड्स फुलफिल करथिला के वाटर it was not easy for early man to hunt he needed special skills and hunt gather food ଏବେ people ସେମିତି hunting କରିପାରିବେ କି କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ special skill ଥିଲା ସେଇଟା to hunt he had to have proper tool use କରୁଥିଲେ and a quick alert mind ତାଙ୍କ mind ପୁରା quick alert ଥିଲା and a knowledge of the animals they hunted ସେ hunt କରୁଥିଲେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହଣ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟା ବହୁତ କଣ ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ହଁ କି ନାଇଁ to gather food he had know which food to gather which food to eat ସେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ କଣ ନା କୋଉଟା କୋଉ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ହଁ କି ନାଇଁ and the knowledge of the season ଅନୁସାରେ ବି ସେ ଖାଉଥିଲେ ensure needed skills and knowledge ଆ ପାଇଁ ବି କଣ skills and knowledge ନିହାତି ହେବା ଦରକାର early man initially used tools such as sticks to dig up wild roots gradually he started making tools out of the stone ताले से धीरे धीरे कोथरे टूल यूज करले ना स्टोर ने हाँ ये नहीं दिस लेट स्टोन एज तयारी हला सेथि में आगु कोन कहला स्टोन एज पर आयरन एज अछि सब अछि हाँ ये नहीं तो एबे ताहले हमें कोन पढिबा स्टोन एज ता माने जे कोनोसी जिंस सब तयारी हेछि कोथरे तयारी हेतिबो स्टोन ने पत्थर तयारी हेतिबो ओके बुझी परछो तो एबे देखिया स्टोन एज सॉरी स्टोन एज केतुरा पार्ट्स रे डिवाइड हला तीनटा पार्ट्स रे थ्री पार्ट्स वन इज पैलेलिथिक second
मेजोलिथिक देन नियोलिथिक ए विषय रे हम एबे गोटे 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 करके देखिबा कोन आर मीनिंग फर्स्ट देखिए पैलोलिथिक पीरियड ओके पैलोलिथिक पीरियड कोन ना द पैलोलिथिक पीरियड began about 2 million years ago 2 million years पूर्व ही स्टार्ट है एंड लास्ट स्टिल आ को पर्यंत चली पिले ना हमर 10000 बीसी बीसी रो फुल फॉर्म के कहि परयो बिफोर क्रिश्चियन कॉमन एरा मेजोलिथिक कोठु को पर्यंत ए टाइम पीरियड मन रखियो मेजोलिथिक पीरियड कोठु ना हमर लास्टेड फ्रॉम 10000 बीसी टू 8000 बीसी ओके नियोलिथिक कोन नियोलिथिक कोठि अराउंड है 8000 बीसी टू 4000 बीसी ताले हमें फास्ट काहा विषय पढ़िबा एबे देखो सेते बेलर ह्यूमन केमिति को पीरियड है ह्यूमन पैलोलिथिक बुझला देखो एमिति से माडोल लागुथिले हमें एमिति माडोल लागुचे से भी सेमिति लागुथिले फाइट लागुथिले देखि परछो तो the Paleolithic period or the Akubiag on the old Stone Age roughly began about 2 million years ago. During this period, a man hunted. A time period, a man hunted, man शिकार करथिले and gathered food. He moved करथिले place to another place, combine a food and a wild animal searching by. He ate whatever could find. से खाउथिले जेतेबेले जा मिलथिला से कोन करथिले he did not wear anything से किसी भी पिंधु नथिले कोते केबे ना in summers in winter किंतु winter season से कोन करथिले ना animals skin को पिंधुथिले and leaves to keep himself warm माने summer ये winter season रे ना तो warm से सिको रहे पई कोन करथिले ना animals skin को और leaves को पिंधुथिले ओके as he was under he moved in search food from place to place he had no home तांकर किसी home नथिला at night he slept a trees or hid in caves से caves माने जो गुम्फा गुडा रे रहथिले ओके स्वयं कैमरा ऑन कर the Paleolithic period is further separated then देखो Paleolithic period पुनी two types से divide हैला तो हमें stone age को three types से divide हैला mind रखो stone age को three types से divide कर what is Paleolithic then Mesolithic Neolithic Paleolithic को पुनी two types से divide कर गोटे होची lower Paleolithic period और गोटे होची middle Paleolithic period sorry बोले तीनटा further divided into three types रे कौन ना हमारा lower middle and upper तो देखो पिले आमे स्टोन एज को थ्री टाइप्स रे डिवाइड करले एटा को पुणी थ्री टाइप्स रे डिवाइड करले आरो थ्री टाइप्स पुणी देखिबा ताले फास्ट देखिबा लोअर पैलेलिथिक एबे कोथरा जो ओल्ड स्टोन एज ओके द लोअर पैलेलिथिक पीरियड कोटा ड्यूरिंग दिस पीरियड ए जो लोअर पीरियड टाइम रे मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस वाज कवर्ड विथ थिक शीट्स ऑफ आइस पिले थरे आइस पूरा रहि के थिला थिक शीट खाली आइस थिला and the climate was very cold ice ରହିଲା ମାନେ ତ obviously cold ରହିବ ହଁ कि नहीं this period was also cold aqua में जो lower paleolithic phase को कौन गए ice age और pleistocene period the hand axe were used to early man during this age रे कौन hand axe भी यूज होतिला ओके ताले मते कहलो ice age टा को period को ice age को जाए which period is known as ice age period why because during this period most of the earth's surface was covered with a thick sheet of ice okay ଏବେ ଦେଖ middle paleolithic period कौन the tools used during this middle paleolithic period were scrapers and boards made stone रे ये तैयारी हेतला सब जला needles were used to sew furs and skins for body covering जो बॉडी रो कवरिंग कौन से ले करिया को needles भी यूज होला से टाइम रे को टाइम रे एटा इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन
निडल्स यूज कले तापर एटा आई सेज कोटा हला बुझला आई सेज हला लोअर पैलेलिथिक पीरियड देन हमर मिडिल पैलेलिथिक रे हला कोन निडल्स निडल्स स्क्रिप्ट्स बुझला वेविंग ପାଇଁ हमर निडल्स इतरे हला ये गला लोअर मिडिल पैलेलिथिक पीरियड then upper paleolithic period देखियो during the period upper paleolithic period the climate becomes slightly warmer warm होतला tools such as cocoa tool na flint blades and projectile points were used to hunting skinning wild animals ताले मते कुह stone age कोन बुझिलो stone age हला थ्री टाइप्स कोन पैलेलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक पैलेलिथिक देखले कोठु को पीरियड ताले हां पैलेलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक देखले एबे किंतु फास्ट हमें कोन पढुचे पैलेलिथिक ही पढुचे पैलेलिथिक पुनी थ्री टाइप्स रे डिवाइड कले ओटे हला लोअर मिडिल और अपर लोअर रे पढिले हमरा आइस एज एटा मिडिल रे पढले जो निडल्स कथा और देन पैलेलिथिक पीरियड रे पढले फ्लिंट ब्लेड एडा रहला हां कि नहीं ताले यूज ऑफ टूल को टूल यूज होतला देखिबा एबे tool were used by early man for different purpose कोथि देखो they are used to weapons for hunting wild animal weapon कम पे यूज करथिले hunting पे का कोंटी करथिले wild animals को they are used for shaping or cutting materials माने कोन जिंस को मटेरियल को कोन करथिले कटिंग करथिले का थ्रो रे जो टूल्स they are used to digging the ground for cutting edible roots जो edible roots गुडा को काटुथिले से stone यूज करिकी they provided a sense of security and a protection from wild beasts and enemies माने शत्रुंगा ठार रक्षा पाए पई एटे जो आरि साजरे जो मुन्न रहिछि अटैक कला से साइडरे से आक्रमण करथिले निजो प्रोटेक्ट करके रखुथिले ओके ताले हम जानले स्टोन एज थ्री टाइप्स रे डिवाइड हला ओडो जे पैलेलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक अर्ली मैन बा ओल्ड स्टोन एज अ हंटर गैदर he hunted animals and ate the raw flesh पंचांश खाई दउथिले हां नहीं he used to create stone tools से यूज करथिले he was a wanderer who moved from place to place search food से place to place कोन पे मूव करथिले ना फूड पे तो ये रहला मेसोलिथिक पीरियड भी पढ़े दा पिले नियोलिथिक पीरियड अरे यार एटा तो छोटो चैप्टरटा भल लागुची ना भल लागने पिले एते जति हम पढ़ेले बुझी होची तो क्वेश्चन नो आज तीनटा को पढ़िता स्टोन एज रो जो पैलेलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक बुझेला ए पैलेलिथिक पढ़े देले आ इथरे कोनो डाउट नाही तो एबे कोन पढ़ेबा पिले कोन एबे हेला गोटे मिनट कोन देखो एबे एबे क्लियर लागी क्लियर है एबे एबे क्लियर है लागी स्वयं क्लियर अछि ओके
ଦି ଜଣ ପ୍रोब्लेम होतला ना जणकर ताहले तोर नेटवर्क प्रोब्लेम अभिजित ओके ओके हो देखो मेजोलिथिक पीरियड अभी कौन देखिबा Mesolithic period or the Middle Stone Age was the period in history that existed between Paleolithic हाँ पिले प्रथमे आसिला Paleolithic then आसिला Mesolithic then आसिला Neolithic ताले Mesolithic टा मिडिल रे रहला ना नहीं तो सही कथाटा से लिखला Mesolithic people use tools ताले एठी कौन टूल सेठी तो हमें जानले Paleolithic रे सब स्टोन यूज होला एठी धीरे धीरे कौन तैयारी यूज कले बोन कौन बोन एंटलर एंड वुड फॉर हंटिंग शिकार ପାଇଁ wood ତିଆରି କଲେ fishing and gathering food ବୁଝିଲା later they use tool found from chips like blades points barriers scrapers known as microliths এই ভଳିକା ସବୁ यूज କଲେ ବୁଝିଲା ब्लेड चिप्स एଗୁଡା यूज କରିକି ଅସ୍ତ୍ର କଲେ ବୁଝାଉଛ ନା ନାଇଁ several human habitats dating back to the stone age been discovered in different parts of the earth. A tent-like structure was found inside a cave. केमिति जानले से सेतले जे सब एमदी यूज होतला बोले ना हमरो किछि किछि एरिया रो फाइंड हैला बोले ना हो कि नै जेमिति के टेंट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड हैला केव कोठी केव रे फ्रांस नै then many haunts made of bones were found in eastern Europe साइबेरिया एडा सब देखिले लोक जानिले नै सेतबेले एमिति अटैक करथले आ हम सेतबेले थिले कि ना सेतबेले कॉपी पेन थिला लिखा जाउथिला सब किछि बोले जहां भी हम हिस्ट्री पढुचे ए सब किछि एविडेंस रो हमको मिलि छै बुझा जना नै तो ये रहा the people living during the Mesolithic period ए जो Mesolithic period रहिला period where hunter gathered gradually towards the end of this period they moved on from being food gatherers of food growers they experiment with his seeds सहित experiment कले by dropping them on the ground तम ground रे रखिले ground रे पकई देखले ये ग्रो करछ ना कोन ताले को टाइम रे जानले कथा मेजोलिथिक पीरियड रे से रियलाइज करले जे नाही कोठो ना गोटे सीड्स रो प्लांट हो जले इंपोर्टेंट क्वेश्चन एडा आछो जा जा कोजी they made attempt to domestic animals like हाँ ताले एई जो हम रहिला कोन मेजोलिथिक पीरियड से धीरे धीरे एनिमल्स को डोमेस्टिक भाबे रखिले डोमेस्टिक भाबे राने रखिबे घर रखिबे को एनिमल्स को ना गोट sheep cattle एडा माने बेसिकली जो माने मिल्क प्रोवाइड करंते आ फूड दियंती तांकु से घर रखिले डोमेस्टिक भाबे रे को पीरियड मेजोलिथिक रे पैलेलिथिक रे गुडा थिला कि नाही से खोजिबे जो आडे पाइबे से आडे खाइबे से बुलिबे सेमदी किंतु एठी धीरे धीरे कोन हैला से जानिले टिके टिके आगु आगु गले ए सर न देखो मेजोलिथिक साइट्स ताले देखिबा मेजोलिथिक रे कोन कोन सब साइट मिलिला मेजोलिथिक साइट इन द आर स्प्रेड अक्रॉस वेरियस रीजन विथ नोटेबल एग्जांपल इंक्लूडिंग भीमबेटका आदमगढ़ देन पंचमारी जोटा कि मध्य प्रदेश कहउछंती बाघर एंड तिलवार आ लंगाज जोटा गुजरात कहउछंती बुझला माने ए साइट गुडा को थिला को टाइम रे मेजोलिथिक पीरियड रे ओके ताले जो साइट विषय रे पढिबा ताले ए साइट थिला माने केमिति जणा पड़ला माने सेतबेले जो जिंस व्यवहार करथिले ए एरिया गुडा रो मिलथिबो सेथि भाई हमरो कोहाला जे ना ए साइट गुडा थिला बोली ए देखिबा से विषय रे सब गोटे गोटे विषय रे कोन सेमिति कोठु थिला केमिति एरिया रे रहउथिले बेली जानिले लोक माने फास्ट देखिया तिलवार ओके अबे देखिया तो माइंड रे क्वेश्चन आस्थो सा सेतबेले केमिति जानले तिलवार रे लोक रहउथिले आ केमिति कोन हमें प्रूव ही हम हिस्ट्री भी लिखा है तो हमर हिस्ट्री जो माने हिस्ट्री स्टडी करंती तो से माने से ऑब्जर्व करले जे एठी रहउछंती कोन ना एविडेंस को देखि केमिति चलो देखिबा वेस्टर्न मोस्ट मेजोलिथिक साइट इन इंडिया एटा होची कोन वेस्टर्न मोस्ट हियर टू फेज अछि फर्स्ट फेज होची कोन First phase Mesolithic and is characterized by presence of microliths, small polystone. The second phase होची कोन wheel made pottery
ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଚକା ଯୋଉ ତିଆରି ସେଇଥିରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ପଟେରୀ ଥିଲା। ସମ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍, କିଛି ଆଇରନ୍ ଦେଖାହେଲା। ଗ୍ଲାସ୍ ବେଡ୍ସ ରହିଲା କୋଉଠି ତିଲୱାର ସାଇଡରେ। ଆଣ୍ଡ ସର୍କୁଲାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡାକ କୋଉ ସର୍କୁଲାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଓକେ, indicate a habitation structure. Diet of people include both meat and vegetable food ରହୁଥିଲା ସେଥିରେ। Fire huts and charred bones indicate settlement of Mesolithic culture। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ fire huts ଆଉ charred bones ଏଗୁଡା ରହିଥିଲା, ଇଏ କଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଥିଲା ନା ମେଜୋଲିଥିକ ରେ ଲୋକମାନେ କଲଚର କରୁଥିଲେ, କଲଚର ସହିତ ଡିପେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କୋଉ ପିରିୟଡରେ ପଢିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ କଣ ପଢିଲେ ମେଜୋଲିଥିକ ନା ନିଓଲିଥିକ ଫାଷ୍ଟ ପଢିଲେ ପାଲେଲିଥିକ ରେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପାଉଥିଲେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମେଜୋଲିଥିକ ର ତିଲୱାର ସାଇଡ ରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଷ୍ଟୋନ ୱାର୍କିଂ ସାଇଡ ଫାଉଣ୍ଡ, ସେଇ ସାଇଡ ରେ କଣ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଷ୍ଟୋନ। ଦେଖା ବାଗଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେଜୋଲିଥିକ ସାଇଡ, ଏଇଟା ଆସିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମେଜୋଲିଥିକ ପିରିୟଡ ରେ କଣ କହିଲି ମେଜୋଲିଥିକ ସାଇଡ ରେ ମାନେ ମେଜୋଲିଥିକ ଟାଇମ ରେ କୋଉ ସାଇଡ ଟା ଥିଲା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, କୋଉଟା ବାଗଡ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? କହିଲ which sites is largest in Mesolithic period? Tell me which sites is largest in Mesolithic period? କଣ ବୁଝିଲ ବା? କାହିଁ ତମେ ପଢନି ବୁଝିହେଲା? କାହିଁ ପଢିବ ଯେ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି କହିଲି ବାଗର, ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ ଆଁ? ଖାଲି ଫୋନ କୁ ଅନେଇକି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଭଳିଆ ଫୋନ ଗିଳିଦବ ଏଇକାନେ। ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଲି ବାଗର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେଜୋଲିଥିକ ସାଇଟ୍ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ମେଜୋଲିଥିକ ପିରିୟଡ ରେ। ଭାବୁଛ ଏମିତି ପଢି ଯାଉଥିବି ଆଁ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ବୁଝିବନି। Located in Bhilwar districts of western Rajasthan near Kothari river। ये कोठी लोकेटेड ହେଇଛି ନା ଭିଲୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଅଫ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରାଜସ୍ଥାନ। वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट कोथुरु जानले ना माइक्रोलिथिक साइट होची बेस्ट डॉक्यूमेंट। थ्री ऑक्युपेशन लेवल गोटे होची मेजोलिथिक, चाल्कोलिथिक और एविडेंस ऑफ आयरन। Microliths made of locally available set and quartz were found in along with a large number of geometric microliths such as triangle, माने जो शेप रो मिलला ट्रायंगल और ट्रापेजेस। हाउस फ्लोर्स paved with stone slabs, जो हाउस रे कौन पड़ुथिला stone slab। stone paved area with a large number of animals bones, ସେଥିରେ कौन अधिक पाउथिले माने बहुत गुड़िए बोन पाउथिले। animals bone of domestic animals such as domestic animals रे पाइले कौन कौन ना sheep रो bone, goat, cattle आर सब बोन भी फाउंड है। इंपोर्टेंट डिस्कवरी है कौन ये ना आमर रिंग स्टोन यूज कौन पे करा ना हामर यूज करा। रबिंग स्टोन्स फॉर ग्राइंडिंग फूड ग्राइंडिंग करा रबिंग होइकी स्टोन गुडा को। ओके, ये सब कोठी पाइले बैगर माने जोटा लार्जेस्ट साइट को टाइम रे मेजोलिथिक टाइम रे। ओके, भलो सेमिति दी जण जाको कैमरा ऑफ कर दियो हैला। अभिजीत कैमरा कहीं ऑफ कर एबे ऑन हैला। ओके, बैक कर देथिलु।
language कौन ना situated in Masan district कोठी Masan district Gujarat रो Masan district रे रही it is most extensively studied sites in Gujarat important discovery एठी ताले कौन रहिला discovery कौन हेतिला ना Merolythis human burial माने सेतेबेले जणा पड़थला एमती burial हेकी कौन human रहंदी human को बता हुए bones of wild animals मानकर bone मिलिला and some posters 14 human skeleton with cut marks on forehead were found केतुटा 14 skeleton मिलथिला हे human नो symbiotic relation with Harappan urban culture found honey and haunted meat were sent to Harappan center Harappan गोटे कौन थिला civilization हाई civilization no नहीं तले ये गला हमारा कोई विषय रे ना मेजोलिथिक की लर्निंग पॉइंट्स कौन देछि मेजोलिथिक पीरियड को मिडिल स्टोन एज कहला ये कहा मध्य रहला पैलोलिथिक और नियोलिथिक मिडिल रे आ एठी पीपल कौन यूज करथिले ना स्टोन टूल्स जोटा कि शार्प आ पॉइंटर रहथिला शार्प माने पूरा मुनिया सब दियो रहथिला मुनिया एंड बाइकुलेट्स notable example of mesolithic sites are India कौन सब साइट रहथिला mesolithic टाइम रे को साइट फाइंड होथिला भीमबेटका आदमगढ़ पंचमारी मध्य प्रदेश देन बागर होची कोन largest sites in mesolithic and हाँ तिलवा राजस्थान नो लिंगांश गुजरात रो then last one असले कोन neolithic period the neolithic period began around 8000 BC and lasted till about 4000 BC the neolithic people learned to make more polished tools ये देखो ये जो सब tools गुडा यूज करथिले ये सब कोन होथिला पॉलिश कर यूज करथिले हां कि नहीं major development of this period was the adaptation of agriculture main development करथिला कोन agriculture को टाइम रे नियोलिथिक पीरियड रे मेजर शॉर्ट क्वेश्चन आसो मेजर एठी कोन डेवलप करथिला एग्रीकल्चर they moved to a large settlement or realized the importance of domestic animals like kahar importance बुझले dogs sheep and cattle importance बुझले and they use them means of transport for providing them with milk and meat Neolithic revolution के मित्र हला ना was a foundation shift for nomadic hunting and gathering to settle agriculture it featured the domestication of plants and animals permanent settlement हेले पॉलीस्टोन तो यूज है गोटे हम जानले एंड ह्यूमन बिगिन टू कल्टिवेट क्रॉप्स ताले प्रथमे को क्रॉप्स एटा भी अच्छा को क्रॉप्स हमें कले एग्रीकल्चर ना व्हीट बार्ली राइस ओके तारे इंप्रूव हैला हाउसिंग इंप्रूव हैला ये सब हेके धीरे धीरे चलला द पीरियड इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन एज सिकिल एक्सेस भी यूज हैला एते पैटा चलला नेक्स्ट क्लास रे आ जो रहला जति के कंप्लीट हे जो